Evening, all of you. So let us see the other questions. ये अभी उधर रख दो यार. नहीं रुको, ये यहाँ रहने पकड़ो. ये उधर रख दो. पीछे पहुंच गए थे ना. 8 क्वेश्चन हम डिस्कस किया था हम लोगों ने. 8th ए ना, फूको एंड हाना एरेंट. So now examine the theoretical foundations of liberal democratic model of political obligation. क्या स्टार्ट करेंगे? Examine the theoretical foundations of liberal democratic model of political obligation. अच्छा, ऐसा ये क्वेश्चन आता है तो कुछ अनकंफर्टेबल लगता है? हाँ? हाँ? नहीं, 2-3 तरीके से, जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिकली शायद क्लास में नहीं किया होता है, तो ऐसे देख के लगता है कि नहीं आता है, या जो पढ़ा है उसका यूज कर पाएंगे हम. हाँ, तो कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे ना हमेशा. और अल्टीमेटली पॉलिटिकल थियरी प्लेटो से हाना एरेंट मिलके ही बनी, और क्या है, बिहेवियरलिज्म, जितने थिंकर हैं उन्हीं का यूज करना है. तो कॉन्फिडेंस ऐसा मत, मतलब वैसे तो नहीं रहता है अनएक्सपेक्टेड, बट रहता है तो भी जोड़ तोड़ के कुछ तो लिखना होता है ना. ठीक है, तो अब इसमें कैसे लिखोगे? एग्जामिन द थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले डिफाइन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. तो डिफाइन करो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. तो ऐसे तो इन जनरल भी डिफाइन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब तो समझते हो, ड्यूटी टू ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो जनरल हो गया. अब अभी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, इसलिए एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख लो. राइट, अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन, the fundamental problem of political philosophy has been to produce such theory which can convince as to why it is a moral duty of the citizens to obey the laws of the country. Full stop. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, दो the idea of political obligation is as old as the origin of political philosophy, going back to the times of Socrates and Plato. Yet the phrase
Yet the phrase political obligation has been coined by T.H. Green in his right inverted commas, उसकी बुक का क्या नाम है? The Lectures on the Principles of Political Obligation. Full stop, right? In his lecture, Green defined that the purpose of the theory of political obligation is to discover the true ground for obedience to law. इसमें से जो भी याद रहे या जैसा थोड़ा सा बना लेना बजाय कि बिल्कुल ही जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. अब नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, या राइट, द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन थियरीज can be, obligation theories are following. पहला लिखो Socratic theory. Socratic theory, right, he gave the reason as gratitude, because a state does so many things for you. Gratitude, comma, being fair and just. Gratitude and comma, being fair and just. पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है क्योंकि, लेकिन ये टॉपिक कभी हम लोगों ने किया नहीं डिटेल में, इसलिए इनके वर्ड्स बता रहे हैं, कभी इन जनरल थियरी आ जाए. ठीक है, तो उसने क्या कहा है, जैसे थियरी ऑफ जस्टिस से सिफिलिस का व्यू था, डूइंग ड्यूटी. अब सॉक्रेटिस ने क्या किया था? सॉक्रेटिस हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप बट ही डिडंट एस्केप आउट ऑफ अ सेंस ऑफ अ ड्यूटी. तो वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है. तो स्टार्टिंग विथ सॉक्रेटिस, एंडिंग विथ मार्क्स और एनार्किज्म, ऐसे थियरीज का रेंज है. ठीक है, नेक्स्ट, डिवाइन ओरिजिन, the theory of divine origin of the state. Divine origin of the state. Next, modern liberal theories. Right, there are two traditions. First is the natural rights tradition or social contract tradition. Second is utilitarian tradition. नेक्स्ट लिखो, राइट, एनार्किज्म, कम्युनिज्म, गांधीज्म, comma, challenge the legitimacy of the state rather than political obligation.
या इसको ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, चूंकि लिबरल डेमोक्रेटिक थियरी पे क्वेश्चन है तो जस्ट एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन थियरीज वेरी फ्रॉम सॉक्रेटिक ट्रेडिशन गाइडेड बाय ग्रैटिट्यूड एंड एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू द एनार्किस्ट एंड मार्क्सिस्ट, फॉर एग्जाम्पल वेयर मार्क्स ओपनली कॉल्स फॉर द रेवोल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है, एंड इन दिस comes the theory of or the liberal theory of political obligation. ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन तो लिबरल थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे, तो यू कैन डिस्कस लिबरल या नहीं. गांधी ने तो स्वराज की बात की है, राम राज स्टेटलेस. गांधी तो टॉल्स्टॉय को फॉलो करते हैं ना, तो ही इज अगेंस्ट स्टेट. कोई ड्यूटी मतलब गांधी का जो है ना अपना इंडियन कंसेप्ट ऑफ धर्म है, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करो. ठीक है, वो कौन सी स्टेट के खिलाफ है? मॉडर्न नेशन स्टेट दैट सेंट्रलाइज्ड. ठीक है, अगर इंडियन नहीं मिक्स करना है तो बस सॉक्रेटिस से मार्क्स तक तुम कर सकते हो, फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स वी सी अ रेंज ऑफ थियरीज. ठीक है, अब लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल क्वेश्चन है, examine the theoretical foundations of liberal democratic. तो liberal democratic model इसको कैसे सेट करेंगे? examine क्वेश्चन पे पहले जैसे ध्यान दो, examine the theoretical foundations of liberal डेमोक्रेटिक मॉडल. कहां से स्टार्ट करोगे? मिल से तो नहीं, हमें पहली लाइन क्या स्टार्ट करोगे? अच्छा, कंटेंट क्या क्या लिख सकते हैं? मतलब तुम लोगों के आंसर में एक स्ट्रक्चरिंग नहीं होती और सब्सटेंस भी नहीं होता. ठीक है, तो सब्सटेंस तो चलो आ जाएगा लिख लिख के. स्ट्रक्चरिंग में क्या, कैसे ये, हाउ विल यू हैंडल दिस क्वेश्चन? थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल. चलो अब कंटेंट के हिसाब से तुम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर लिख लेना. यूटिलिटेरियन में बेंथम एंथम है. ठीक है, टीएच ग्रीन, मिल, जो एक तरीके का लिबरल ऑक्सफोर्ड ट्रेडिशन लिख देना. कंटेंट तो है, स्टार्ट कैसे करेंगे और टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखेंगे? वेरी गुड. तो हमेशा जब हम, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं स्टेट बेस्ड ऑन कंसेंट, राइट टू रेजिस्टेंस, विल ऑफ द पीपल, ये सब बात की है ना, तो हमेशा जब भी कोई टर्म टेक्निकल वर्ड है उसको पहले उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया करो. ठीक है, जिससे कि जब हम आगे थियरीज एक्सप्लेन करें, थियरी ऑफ कंसेंट, थियरी ऑफ यूटिलिटी, सो आई कैन रिलेट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो लिबरलिज्म की कोर वैल्यू, लिबरलिज्म विल गो फॉर लिमिटेड स्टेट. ठीक है, तो यहां से लिखो, राइट लिबरलिज्म is a philosophy of modern times, a product of enlightenment, which emphasized on the reason of man and hence give importance to the rights of man, full stop, right? Its core value is liberty, comma, hence they give limited state, they give the theory of
limited state फिर लिखो राइट द डोमिनेंट ट्रेडिशन इज social contract tradition according to which अब social contract लिखा तो उसको inverted commas में लिखो according to which state is a product of the will of man full stop right the liberal tradition starts with John Locke who held that गवर्नमेंट इज क्या वर्ड यूज करता है वो ट्रस्ट गवर्नमेंट इज ट्रस्ट people are trustees right government has no original powers only delegated powers state is a night watchman inverted commas में लिखो state is a night watchman right people have right to revolt in case a state does not act according to the wishes of trustees right similarly Rousseau has explained the basis of political obligation in the theory of social contract and in the idea of right inverted commas general will idea of general will right since the laws are product of man's will comma when we obey law then only we are free ठीक है तो जनरल विल का तो वाई वी शुड ओबे द लॉ बिकॉज वी वॉन्ट टू बी फ्री एंड अकॉर्डिंग टू लॉ उतना थोड़ा सा इधर मतलब साइड ट्रैक हो गया बट इस बात पे करना था बिकॉज the laws are also represent our consent and they are tied state is also tied and Locke to even gives right to revolt okay next right utilitarian tradition represented by Bentham J.S. Mill right according to this tradition a state is an instrument of utility right according to Bentham
right? Only such policies of state are legitimate which give, which produce, right inverted commas, greatest happiness of the greatest number. Right, next. With T.H. Green, we see, next, with T.H. Green, we see the beginning of new tradition known as positive liberalism or Oxford School of Idealism. Oxford School of Idealism. Right, T.H. Green has criticized the view that force is the basis of the state. He has criticized the view that force is the basis of the state. Rather, he held that will is the basis of the state, comma, people have will for the state because it क्या आ सकता है, hinder the hindrances. अब सारे चूंकि लिबरल है तो इनके सबकी एक कॉमन क्वालिटी को पकड़ो, ठीक है? तो all liberals they deny force as the basis of the state, and all, whether it is Bentham or Locke or Rousseau, they are all the supporters of democracy. Okay, so for liberals the law should be representing the will of the people, and democratically the laws which are made through a democratic process where the will of people is represented, this itself becomes the basis, because state is an institution which we have created for our convenience. Is this clear? तो इसको sum up कैसे करेंगे? लिखो, right, दो different liberals have given different theoretical foundations of the political obligation yet all of them believe that it is a moral obligation of the people to obey the state, to obey the laws made by state if these are made by the democratic process. फिर इसमें रॉल्स भी डाल सकते हो, राइट? लेटर ऑन जॉन रॉल्स in his book, which book? Political Liberalism. In his book Political Liberalism has suggested that even when
people may have differences on their comprehensive doctrines. हर एक इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते जाओ ऐसे वर्ड या अंडरलाइन करते जाओ, comprehensive doctrines, yet for the sake of stability people in a democratic society develop overlapping consensus. On the principles of justice. Right? They find this is the best way to resolve the disagreements. To resolve the disagreements. ठीक है, तो राइट thus there are different theoretical foundations in the liberal democratic model right. It varies from the extreme theories like Socratic tradition on one hand to anarchism on the other hand. अब जैसे इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता था कि theoretical foundations of political obligation are based on their assumption of human nature and their understanding of the state. ठीक है, मतलब लेकिन यही वाले जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसका मल्टीपल जगह पर यूज है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, समझ में? टीएच ग्रीन में आ जाता है, रॉल्स में भी आ जाता है. हॉब्स लिबरल नहीं है, हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट है. लॉक इज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म. ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में भी वही लिख सकते हो कि एज you can say that Macpherson says that it is a fundamental concern of the political philosophers, first coined by T.H. Green, and political obligation explains the rationale why a citizen should be obliged towards the state. Political obligation theories are of diverse nature, starting from Socratic tradition, which goes into extreme absolute obligation to the state, to the anarchist tradition where there is no obligation towards the state and state is a necessary evil. The major theories of political obligation are liberal theory, and liberal theories base state in terms of consent. The feature of liberalism is that man is rational and so democratically elected system. फिर एंड डिफरेंट बस ये फिर ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि लॉक हैज एक्सप्लेन्ड obligation because government is a trust. Then next, Green explained because he believes that state hinder the hindrances. And in contemporary times, John Rawls' concept of overlapping consensus, that the rational people will find that this is the best way to address the differences. नहीं, शॉर्ट नोट में बहुत जब तक शॉर्ट नोट में क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, शॉर्ट नोट में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मीनिंग ही एक्सप्लेन कर सकते हो, हर थिंकर की थियरी नहीं एक्सप्लेन कर सकते.
ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नहीं, क्रिटिकली एनालाइज द, अगर आता है कि क्रिटिकली एनालाइज द लिबरल थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो तुमने कहा कि स्टेट इज अ कंसेंट. नाउ दिस व्यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम द मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव, एनार्किस्ट परस्पेक्टिव. हमेशा जहां भी स्कोप हो तो पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करो, तो उससे आसान भी हो जाता है, अपना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है और थियोरिटिकल भी लगता है. ठीक है, और सेफ भी रहता है कि भाई मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस दैट. ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन, द राइज ऑफ ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स is a product of enlightenment. Show how social contract thinkers contributed to the development of discourse. The rise of human rights discourse is a product of enlightenment. इसका introduction बताओ. Human rights is a, rights itself is a modern concept. तो पहले ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं बता रहे हो? इसमें पहले ह्यूमन राइट्स से स्टार्ट करेंगे कि नहीं, कि एनलाइटनमेंट से? ह्यूमन राइट्स से. तो पहले तो ह्यूमन राइट्स नॉर्मली स्टार्ट किया करो, मोस्ट एनर्जाइजिंग आइडिया ऑफ आवर टाइम्स. full stop. Formal recognition after Second World War in the form of UDHR. फिर ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन जरूर करो, राइट. राइट, सम राइट्स विच आर अवेलेबल जस्ट बिकॉज we are humans. फिर इसके फीचर्स दे दो. अब ह्यूमन राइट्स और एनलाइटनमेंट को लिंक करना है. द राइज ऑफ ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट. यस, ओके. तो you can write, मतलब इसको लिंक करना है. तो what you can link that the concept of human rights has its theoretical foundations in the two theories. कौन सी पहली theory? Theory of natural right. Theory of natural right given by John Locke. Second कौन सी theory? Theory of human dignity. आज के टाइम के भी लिख दो. देखा था तुम लोगों ने कल, हम लोगों ने सेकेंड पर्सन, जैक डॉनेली एंड एलन जी वर्थ. इन प्रेजेंट टाइम Jack Donnelly favors the tradition of right. फिर भी एक बार क्लास नोट से कम देख लेना. एंड जी वर्थ the tradition of dignity. अब इन दोनों चीज़ों को एनलाइटनमेंट से लिंक करो. था कुछ एनलाइटनमेंट में ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स? यस, ठीक है. तो फिर लेकिन पहले एक एनलाइटनमेंट का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट? 15th की 17th? हाँ, रेनेसा के बाद आया ना. नहीं, एनलाइटनमेंट कब का है, स्टार्ट कब माना जाता है? 17th सेंचुरी.
हॉब्स लॉक ये सब 17 में थे ना. You can write enlightenment, right, is supposed to be the product of Renaissance. Right, it denotes the end of dark ages, comma, the beginning of age of reason. Right, enlightenment thinkers establish that man is rational, inverted commas में, man is rational and reason should be the basis of authority. Reason, not religion, should be the basis of authority. Right, the theory of divine rights of kings was replaced by what? Theory of natural rights of man. Theory of natural rights of man. Right, since man has a reason, comma, man has rights. Right, in the words of John Locke, right, inverted commas, reason in man teaches him not to harm the other, in his life, liberty and property. अब मेन क्वेश्चन क्या है? शो हाउ social contract thinkers contributed to the development of the discourse of human rights. इसमें कैसे लिखोगे? Show how social contract thinkers contributed to the development of discourse of human rights. Show how social contract thinkers. So every social contract thinker talks about the natural rights of man. The very idea that the government is product of the contract itself explain the reason in man and the rights of man, and for the protection of these rights the state has come into existence. Okay, so you can write that. In political philosophy, social contract tradition provides the strongest justification for the rights of man and the view that the authority of the state is drawn from the man himself. Right, state is a means, man is an end. Right, Hobbes has given the strongest justification of
right to life or self-preservation, ठीक है, comma, though state is sovereign, yet cannot deprive a person from his right to life in an arbitrary manner. Right, he gives man right to resist. Right to resist the state. Next, John Locke has established that right to life, liberty and property are the inalienable rights and in case a state deprives, comma, man has right to revolt. Next, right, Rousseau in his theory of general will explained that for the protection of freedom, man has created a state. Right, French Revolution, which led to the declaration of the rights of man, is inspired by Rousseau. Right, next, right, even in contemporary times, John Locke revives, John Rawls revives the tradition of social contract as well as the tradition of Immanuel Kant, while deriving the principles of justice. Right, the very first principle of justice is that all people will have the right of basic liberties. Right, thus social contract tradition provided the theoretical basis for the human rights. Right, there are some rights which are fundamental
to human existence. Comma, a state cannot claim the absolute authority right. A state has to ensure the human rights, and in case of failure of a state, it becomes what? Responsibility of international community to protect. क्वेश्चन में तुम्हारा एनालिटिकल स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, तुम्हारा जजमेंट, इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू रिलेट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ चेक करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर लेट्स से 7. Machiavelli is characterized as amoral, if not immoral. Explain the reasons why such characterization is flawed and inadequate. It is flawed. You can say not flawed. Is flawed and inadequate. They are saying explain this is flawed. हाँ, तो अब उनका मन एग्जामिनर वो लोग जो भी है. क्वेश्चन कभी कभी कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें लगे कि क्वेश्चन नहीं सही है, तब क्या करोगे? जो है वही है. जितने तुम्हारे पास एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हाथ में रिसोर्सेज है, उसी में काम चलाना है. और इंडिया में तो हमेशा कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम करके दिखाना है. ठीक है, कम नॉलेज में, और जो है वो तो है ही, अभी दिया हुआ है. सो Machiavelli is characterized as amoral, if not immoral. वैसे 2-3 बार पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा आंसर. Explain the reasons why such characterization is flawed. तो फिलहाल टेंशन ये वाला पार्ट दे रहा है, आधा पार्ट तो लिख लो, उसके बाद टेंस हो लेना. इज दैट क्लियर? तो आधा तो काम खत्म ही कर सकते हैं. बीच में सोचते भी 2-3 बार. नॉर्मली ऐसे ही करना चाहिए, एकदम शुरू से ही टेंशन में नहीं. जब आएगा टेंशन तब देखेंगे. 70% तो इसी में काट देंगे. इज दैट क्लियर? Machiavelli is characterized as amoral, if not immoral. अब amoral है या immoral है, तीसरी क्या चीज बच सकती है? जिस moral बच सकती है ना? तो कहीं तुम्हारा चैलेंज है कि कहीं उसको प्रूव कर सकते हो. morality also, morality तो subjective term है. अगर मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आए, एग्जाम जो है फिर से बता रहे पूरा साइकोलॉजिकल गेम है. बहुत सारा पढ़ने के बाद भी लोग नहीं परफॉर्म कर पाते. एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल अबाउट परफॉर्मर्स.
तुम परफॉर्म, तुमको तो एग्जीक्यूशन करना है ना, तो तुम अगर साइकोलॉजिकली अपना स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रखोगे और कॉन्फिडेंस में रहोगे, हमेशा आंसर लिख पाओगे। क्योंकि कई लोग जब सेलेक्ट होते हैं उनको खुद नहीं लगता कि उतने मार्क्स क्यों आए, बिकॉज उनको अपनी नॉलेज उतनी नहीं लगती, बट दे टेक एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटाइजेशन, नीटनेस, बाकी बहुत सारे लोग जान के भी नहीं लिख पाते। तो हमेशा अपना साइकोलॉजिकल स्टेट बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। सो मैं क्या, और वैसे भी अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो खुद ही पकड़ जाता है थीम। दिस इज अ आर्ट, वही डेरिडा वाला रीडिंग मिस रीडिंग, रीडिंग मिस रीडिंग, गलत समझ गए, अच्छा मॉरल, लेट्स वी कैन प्रूव इन दैट सेंस, ठीक है। तो फिलहाल हाफ पार्ट ऑफ द आंसर कैसे किया जाए, मैकियावेली एज ए मॉरल इफ नॉट इमोरल। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, मैकियावेली एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म है, और लेकिन जब हम मॉरल इमोरल वाली बातें कर रहे हैं तो कुछ और इंट्रोडक्शन, मोस्ट क्रिटिसाइज्ड थिंकर, ठीक है। तो लिखो राइट इंट्रोडक्शन में, या you can also say it remains a matter of debate. हाँ, आइडियली तो ये चाह रहे हैं, लेकिन इन द एंड यू कैन ऑलवेज से it will remain a matter of debate, but definitely he is not immoral. Yeah, definitely we can say, but he is not immoral. Yeah, immoral मतलब moral नहीं है, amoral मतलब indifferent, नहीं क्या यही होता है, ठीक है। समझ में एक है indifferent, amoral, आई हैव नो कंसर्न, और एक है आई एम अगेंस्ट, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, ठीक। तो अब लिखो इसमें राइट अकॉर्डिंग टू डनिंग, DUNNING, डनिंग, मैकियावेली इज one of the most unfortunate figures in the history of the Western political philosophy. Right, it is a paradox that he has been criticized for telling what is the reality, what is inverted commas में लिखो, what is the reality of politics, full stop. The irony is that everyone in the field of politics practice Machiavelli, but no one accepts himself as Machiavellian. अब नेक्स्ट लाइन क्या होगी इस आंसर में, मॉरल इमोरल पे आना पड़ेगा ना, क्या लिखना चाहिए,
separation. So the main reason for his criticism is the separation. ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे? Next paragraph, right? The defining aspect of Machiavellian thinking is the separation he makes between politics and ethics. Right? His book, The Prince, is one of the best books in the field of statecraft. Right? Machiavelli has advised Prince to look at the things as they are, rather than as it ought to be, comma. Right? He warns Prince not to look for goodness in every profession. Right? In politics, Prince needs to learn how to be bad rather than how to be good. Right? He advises Prince to understand the autonomous nature of the field of politics. Right? It is neither ethics nor religion. Right? Political actions cannot be judged from the standards of ethics or religion. Right? He invents the concept of dual morality. Right? The supreme ethics of the Prince is protection of national interest, full stop. In politics, political actions to be judged by political morality. Right? And the political morality is ends justify the means.
It is for this reason Machiavelli has been criticized as a villain. उसको कुछ बोलते हैं ना, कुछ devil वेविल type, ऐसे कुछ, as a villain or as a devil. devil villain इस type से भी बोलते हैं. तो now the question is, Machiavelli is characterized as amoral if not immoral. अब लिखो right. Machiavelli has been criticized as immoral because of the separation he makes and the sanctions he gives या permission he gives to use any means. Right, next paragraph. Right, later on scholars preferred to call Machiavelli amoral rather than immoral because Machiavelli does not suggest prince to be unethical, he only permits prince to use any means so far the national interest demands. ठीक है, right, next paragraph. Right, morality or you can write Machiavelli as moral, immoral or amoral. Machiavelli as moral, immoral or amoral. Will depend on how we take these conceptions. Right, we can go for reinterpretation of Machiavelli. In the sense that he distinguished between the morality of the prince and the morality of the common man. Right. The Prince is a book that deals with the system of administration in a society where people are corrupt
right? Machiavelli's ideal state is republic, which he discussed in discourses. Right, where people are moral, virtuous. He recommends the republican form of government. Right, thus nowhere Machiavelli is immoral, comma, Machiavelli understands the importance of morality. Comma, he was at pain looking at the state of Italy. He was at pain looking at the state of Italy of his times. फिर ये लिख दो, right? Machiavelli as moral, immoral. Will remain a matter of academic debate. Comma, these are interpretations. These are interpretations of the people. Is right? However, Machiavelli remains the greatest patriots in the tradition of Western philosophy. And his status remains uncontested. दो लाइन अपनी तरफ से लिख देना. मैकियावेली की याद में अच्छा सा तो थिंकर है इतना, ठीक है. तो वही है क्या, इसको सब डेरिडा वेरिडा से भी लिख सकते हो. एनी अंडरस्टैंडिंग इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड इट्स जस्ट अ इंटरप्रिटेशंस of Machiavelli, and interpretations will keep on changing. Okay, but इतना बहुत है फिलहाल. आंसर राइटिंग में क्या समझा, बहुत सारा समय कूली उस कंसेप्ट या थिंकर के कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करा करो, तो पढ़ने वाले को मतलब आंसर में सब्सटेंस मिलना चाहिए. जस्ट एक सुपरफिशियल रेफरेंस देके नहीं जाना है. अगर पावर का कोई कंसेप्ट है तो पूरा कूली एक पैराग्राफ उसके ऊपर देना है. जैसे मैकियावेली के थॉट्स को लिंक करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है. तो नॉर्मली तुम लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन के आंसर पे जाते हो कि क्वेश्चन का हम आंसर देने लगे, और सोचते हो कि उसका पूरा थॉट एक्सप्लेन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू विल नेवर फाइंड, मतलब देन देयर इज नो सब्सटेंस इन द आंसर. यू हैव टू शो दैट यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ. कुछ भी पढ़ते समय अगर जस्ट मैकियावेली ही इज criticized immoral because he separated and he said ends justify the means, अगर इतना लिखोगे तो it is never satisfying for a person who is reading. He wants to know more what you know about Machiavelli, but it should not be irrelevant. ठीक है, तो कम से कम जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है
क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, उनको एड्रेस करना है, लेकिन दैट कंसेप्ट हैज टू बी डेल्ट होलिस्टिकली। कुछ तो फॉर्डर होना चाहिए पढ़ने के लिए, कि कोई ऐसा मतलब एक दो पैराग्राफ लिखो कि पढ़ने वाला खो जाए मैकियावेली में, क्वेश्चन भूल ही जाए क्या बच्चे ने समझा है? लिखा है, इसको शब्द भी याद है मैकियावेली के। ऐसे फॉर्डर मिलना चाहिए दिमाग को, ठीक है? तो ऐसे सुपरफिशियली टच नहीं करना होता है। दिस इज वन। जैसे बिहेवियरलिज्म तो पूरा एक्सप्लेन करो, इवन इफ दे आस्क लिमिटेशंस, तो तुम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेशन तो लिमिटेशन, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गिव सब्सटेंस ऑफ द, खासकर थियरी में, ठीक है? कभी-कभी स्टेटमेंट पूरा ऑपोजिट आ जाता है, जैसे हमने किसी चीज के बारे में तो प्रूफ करना है ना, यू शुड हैव अ एबिलिटी टू प्रूव, बट यू शुड नो द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। किसी ने बिल्कुल अपोजिट बोला है तो क्यों बोला है, तो इसी को तो कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। सारा खेल किस बात का है? लॉजिक का है। आइदर यू एग्री विथ समबडी दिस पर्सन्स लॉजिक और दैट पर्सन्स लॉजिक। मैम हमारा ज्यादा फोकस किस चीज पे रहना चाहिए, जो स्टेटमेंट है उस पे या हमारे जस्टिफिकेशन पे? ऐसे नहीं, मैकेनिकल नहीं हो सकता आंसर। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कहाँ ले जाना चाह रहा है। rather than what is written, you have to find out what exactly the examiner wants to bring out from me. हमसे क्या जानना चाहता है ये इंसान? मुझे घुमा रहा है कि मैकियावेली खराब है, तो एग्जामिनर के दिमाग को एकदम पढ़ना होता है कि ये मुझसे क्या चाहता है। He wants to see what aspect of my understanding of Machiavelli. तो मैकेनिकल कुछ नहीं है आंसर में, सोशल साइंस में कोई कुछ मैकेनिकल नहीं है। तुमको बिल्कुल पकड़ना है, क्वेश्चन पूछा है तो मेन थीम क्या है, वेयर इट इज हिटिंग, व्हाट एग्जैक्टली। हर इंसान एक आंसर ढूंढता है ना मेन, उसी को पकड़ना इज योर स्मार्टनेस। तो ऐसे मैकेनिकली नहीं कि हम इसको इतना लिखेंगे उतना, ऐसा कुछ सोच के जाओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके शॉर्ट नोट्स आते हैं जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट आते हैं, उसमें तो हमको बहुत ही स्मॉल में रेफरेंस देने होते हैं ना, कि उसने 3 आइडियाज वो दिया है, 8 हाँ, वहाँ तो ये सही। या तो तुम किसी चीज का सोल एक्सप्लेन कर दो, अगर सोल वही एक्सप्लेन कर सकता है जिसको बहुत अच्छा लैंग्वेज और एक्सप्रेशन पर कमांड है। अगर उस तरीके से नहीं है तो फीचर्स फिर एक्सप्लेन करो, ठीक है? या तो तुम इस ढंग से लिख पाओ कि बुद्धिस्ट थॉट विदाउट गिविंग द फैक्चुअल फीचर्स यू आर एबल टू मेक योर पॉइंट। अगर अरविंदो घोष जैसे लिख सकते हो आत्मा वाला, तो निकाल के रख दो बुद्धिज्म की, नहीं तो भैया फैक्चुअल लिख के खत्म। तो वही तो कह रहे, सबकी स्किल वो नहीं होगी लेकिन किसी की तो होगी ना। तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम खत्म करो, एक ही क्वेश्चन में थोड़ी 60% नहीं भी आए तो भी हो जाएगा ना, ठीक है? तुम बस ये सोच के एग्जाम देना मैं लिख रहा हूँ, मेरा होने वाला है, और बाकी जितने लोग बैठे हैं इनको कुछ नहीं आता है, ऐसे आराम से लिखते रहना, ठीक है? नाउ टू व्हाट एक्सटेंट डज द आइडिया ऑफ वुमेन्स राइट्स, वुमेन पे बहुत क्वेश्चन हो गए इसमें है? एक यूपीएससी में एक सेक्शन ही बनाना चाहिए, नेक्स्ट पेपर है वुमेन इश्यूज, ऐसे पेपर 1 2 3 4 वुमेन, एक ऐसे मेरे हिसाब से जीएस का बना देना चाहिए, वुमेन एंड गांधी है? हाँ, मतलब इतना पूछते हैं आईआर में कहीं भी। टू व्हाट एक्सटेंट डज द आइडिया ऑफ वुमेन्स राइट शेप the theoretical conception of equality and liberty in contemporary times? Do you think it is a significant development in the discipline of political science?
बताओ इसको. टू वॉट एक्सटेंट डज द आइडिया ऑफ वुमेन्स राइट्स shape theoretical conception of equality and liberty in contemporary times. इसका स्टार्ट में कौन सी लाइन लिखोगे? वुमेन के बारे में लिखोगे क्या इक्वालिटी और लिबर्टी के बारे में? हाँ, इक्वालिटी एंड लिबर्टी की वुमेन. किसी को ऐसा लग रहा है वुमेन राइट से शुरू करें? नहीं कर सकते, यू विल गेट ट्रैप. वुमेन राइट पे क्वेश्चन ही नहीं है. क्वेश्चन तो है लिबर्टी इक्वालिटी का कैसे फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन है. तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी से स्टार्ट कर दो. क्या लिखोगे लिबर्टी इक्वालिटी के बारे में? क्या सीधे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में तो कैसे आओगे? हजार थिंक कर सकते. पहले जेनरिक स्टार्ट करो ना कि पॉलिटिकल थियरी या पॉलिटिकल फिलॉसफी डील्स विथ दीज कोर कॉन्सेप्ट्स. liberty, equality, justice, rights, these are the core values or the concepts explored by the political philosophers. तो point number 1, पहले generic introduction दो कि equality, liberty, political philosophy का main area है. या सीधे लिखो rights, liberty, equality and justice. Rights, liberty, equality, justice are the core concerns of political philosophy. अब सेकंड क्या लिखोगे? सेकंड लाइन क्या हो सकती है? कंटेस्टेड इशू है. ठीक. conception of equality and liberty. So you can write that, write the equality and liberty have been dealt, have been defined by scholars differently. Right, to begin with, first लिखो liberty remains the main concern of the liberals. क्या लिखेंगे इसमें आगे और क्या लिख सकते हैं काम की बात? लिबर्टी और इक्वालिटी. तो लिबर्टी के बारे में एक पैराग्राफ. पहला लाइन तो मैंने बता दिया, लिबर्टी रिमेन्स द मेन कंसर्न ऑफ लिबरल्स. राइट्स को कनेक्ट नहीं करना है, लिबरलिज्म में ही लिबर्टी के व्यू लिखो ना. यस, हाँ, लिबर्टी के बारे में पहले थोड़ा लिख दो. और अगर किसी को पता हो तो इजाया बर्लिन ने अपनी बुक में 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी एक्सप्लेन करें, तो उसके थ्रू लिख दो. ठीक है. You can write Isaiah Berlin in his book 4 Essays on Liberty have explained the 2 concepts of liberty found in liberalism. पहला, right, the negative liberty, which is understood in terms of absence of states interference,
as found in the works of classical liberals John Locke, Bentham, Adam Smith, Thomas Jefferson, and neoliberals like Hayek, Nozick, Milton Friedman, अभी समझ में आया कैसे लिखना है आंसर? आराम से पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, मेन आंसर घुमाते जाओ, बाद में लिखते हैं। फिर लिखो राइट। सेकंड, द पॉजिटिव लिबर्टी comma, the tradition started with whom? T.H. Green, who defines liberty as inverted commas में capacity, right? Supported by positive liberals like Barker, L.T. Hobhouse, and in recent times, the social liberals like Rawls, Amartya Sen, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, दो liberty has been the main concern of liberals, yet Marx also tried to define freedom in terms of the freedom from necessities. अब second description, equality, right? Though liberals talk about legal equality and equality of opportunity, it is socialists who have primarily emphasized on the equality in terms of absence of classes, which they consider is the substantive idea. Next, modern and social liberals like Rawls, Macpherson, tried to establish the golden mean by accommodating the importance of social and economic equality for the sake of
human dignity. अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म रिमेन्स मेन स्ट्रीम थियोरीज. And in the words of feminists, male stream theories, male stream theory. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो, राइट, इनिशियली लिबरल फेमिनिस्ट्स advocated for the similar rights for women, similar rights for women as enjoyed by men. Next, socialist feminists had questioned the gendered division of labor in a capitalist society and advocated for the recognition of the domestic work and the need of equal wages for equal work. Right, next, radical feminists like Betty Friedan realized that women concerns need to be understood from the perspective of women. Right, liberty to be redefined in terms of from the in terms of liberation from patriarchy. And equality in terms of gender equality, comma, the social construction of gender right. Next, Iris Marion Young gave the concept of differentiated equality. Differentiated equality लिखो, citizenship नहीं. Differentiated equality, differentiated citizenship multiculturalism में आ सही. Differentiated equality, right? According to her, a state need to recognize the differences in the social positions of women
and should take affirmative action. Right? She emphasized on, right inverted commas, differentiating the equality to equalize the differences. Right. Up question है, do you think it is a significant development in the discipline of political science? Yes. So you can say that, yeah, the contribution of the feminists towards the reinterpretation of the concept of equality and liberty gives the greater substance and purpose to these terms. Full stop. Women constitute half of the human race. But bear the major burdens of violence, poverty, deprivations, full stop, right? They have been excluded from the structures of decision making, right? These notions will help us in, yeah, these ideas will help us in bringing the real change in the status of women, right? If we would have not understood such ideas, and simply applied the conventional ideas, it would not have helped much. Here is question at discipline of political science. So, right, political science has been criticized as one of the most masculinist of all disciplines. The incorporation of feminist discourse ends the stigma. Next question is, why are the issues of sovereignty and authority considered to be significant, especially in context of globalized world?
सॉवरेनिटी और अथॉरिटी में डिफरेंस है ज़्यादा नहीं, तो अलग अलग करें या एक ही में घुमा लें? हैं? एक Why are issues of sovereignty and authority considered to be significant, especially in context of globalized world? एक लाइन वाला आंसर। हाँ, पहले तो एक लाइन का आंसर सोच के रखना होता है वैसे। बताओ, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में why are issues of sovereignty and authority considered to be significant, especially in context of globalized world? Significant क्यों है? The meanings are changing and they needs to be redefined. हाँ हाँ, मतलब why are the issues of considered to be significant means globalization world के साथ how are you going to accommodate the concept of sovereignty and authority, because we have been used to be living with these ideas. ठीक है, तो what readjustment, redefine is required, and which concept of authority and which concept of sovereignty goes in sync with the globalization. हाँ, बेसिकली ये बताना है कि हम लोग अब तक जैसे रहते आए तो इश्यूज ऑफ सॉवरेनिटी एंड अथॉरिटी के कंटेक्स्ट में हमारा पॉलिटिकल लाइफ रहा है। ग्लोबलाइजेशन उसको एक चैलेंज करता है, तो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत तरीके से लाइफ को चेंज किया है। साथ ही ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इनटू नॉर्मलेसनेस, and globalization also needs us to rethink the way we understand political authority, sovereignty. It forces us to rethink about the traditional notions, institutions and practices. अभी समझ में आया? तो globalization has unsettled our life, ठीक है, and to be in sync with globalization or to be able to accommodate the globalization, we need to rethink about these particular concepts. अब पढ़ के देखो, ऐसा लग रहा है ये सही है एक्सप्लेनेशन? सही लग रहा है? Why are the issues of sovereignty and authority considered to be significant, especially in, पहले तो globalized world कर देंगे। अब globalized world has challenged the sovereignty, the traditional sovereignty and authority. So new concepts have come up, but still it is not that old has gone altogether, and the very present time globalization is in the retreat. ठीक है, इसको लिखो, पहले क्या लिखोगे? Why are the issues of sovereignty and authority considered? Sovereignty and authority से शुरू करेंगे कि globalization से? नहीं, globalization से करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है ना, तो क्या है ग्लोबलाइजेशन? हाँ, तो पहले लिखो इन कंटेक्स्ट ऑफ, पहले लिखो ग्लोबलाइजेशन। हाँ, तो सॉवरेनिटी एंड अथॉरिटी इज दिस, ग्लोबलाइजेशन इज दिस, फिर ये इम्पैक्ट, ऐसे थोड़ी लिखोगे। ग्लोबलाइजेशन के फ्लो में सॉवरेनिटी को एडजस्ट करना है। हवा किसकी है, सॉवरेनिटी की कि ग्लोबलाइजेशन की?
उड़ेगा कौन? हाँ, जिसकी हवा है, जिसका बहाव है, उसमें जाना होता है ना। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनको समझाना है, इनके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी ग्लोबलाइजेशन समझाना है। तो व्हेन यू विल एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन, these concepts will automatically come, बट व्हेन यू विल स्टार्ट विथ अथॉरिटी, तो वो आंसर जो होगा वो ऑर्गेनिक आंसर नहीं लगेगा, वो फिर सेग्रीगेटेड लगेगा आंसर। ठीक है, तो इसलिए यू स्टार्ट विद द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन करो, क्या लिखोगे? ग्लोबलाइजेशन, डीटेरिटोरियलाइजेशन, या जो भी लिखना है। थॉमस फ्रीडमैन वाला आंसर याद रखना, वो कोट, वर्ड हैज बिकम, पता नहीं क्या, फास्टर, हाँ, फास्टर, डीपर, फर्दर क्यों? It is easier to means reach faster, farther, deeper and सेकेंड वाला वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। farther, far away. फार्दर थोड़ी, क्लोजर होगा। नहीं मैम, ज़्यादा दूर तक पहुंचना आसान है। वो ऐसे बोलता है कि it is easier to reach the world farther, faster, cheaper and deeper. चीपर, डीपर, फास्टर। यहाँ पे लिख लो, इंट्रोडक्शन देख के लिखना, मुझे इतनी याद है थॉमस फ्रीडमैन का। या केनिची ओहेम, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, और ग्लोबल विलेज, मार्शल मैकलुहान। ये 3 वर्ड से ग्लोबलाइजेशन, फिर अपने समझाने लगो डीटेरिटोरियलाइजेशन। अब इसको लिंक कैसे करोगे? नहीं तो एक लिंकिंग स्टेटमेंट भी तो होना चाहिए लिंक करने के लिए। नहीं, ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड sovereignty नहीं, so many aspects of our life, including the state and the system of governance। ठीक है, तो राइट, फिर लिंक करो ना, ग्लोबलाइजेशन हैज unsettled the many aspects of our life, including the principles and practices of governance। Right, it has put challenge to the conventional concepts of authority and sovereignty। अगर तुम सॉवरेनिटी अथॉरिटी से आते तो फिर ट्रैप हो जाते, वो आंसर फिर कटा वटा लगता, मतलब फ्लो में नहीं लगता आंसर। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? राइट, यस, राइट, we have been living with the Westphalian notion of sovereignty as found in the works of Hobbes and Austin। Hobbes and Austin, John Austin, right? A state is supposed to be the sovereign institution in both external and internal spheres।
right? Similarly, the traditional concept of authority has been the centralized conception of authority. अब ग्लोबलाइजेशन में अथॉरिटी को क्या हुआ, किस तरीके का चेंज आया है? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और सॉवरेनिटी में, तो ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन राइज टू कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेंड्स, कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेंड्स, इंटरनेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म एज वेल एज लोकलाइजेशन. ठीक है, तो it has given rise to two contradictory trends, right? Globalization has given rise to two contradictory trends. The growth of international organizations, supranationalism, as well as localization, the rise of global civil society, social movements, ठीक है, तो राइट, ग्लोबलाइजेशन force us to rethink the notions of sovereignty and authority. Right, next paragraph. Though it is another debate as whether globalization has actually impacted the sovereignty or globalization remains state controlled but there is an emergence of new concepts like sovereignty as a responsibility, pooled sovereignty, right? Similarly, in terms of authority, globalization has given rise to transnational governance, as well as the growth of grassroots democracy. Right, लिख सकते हो, right? The present age is an age of transition. We live in an uncertain world.
comma, at times it appears that globalization is in retreat. Considering the protectionist policies but no one can deny the fact that the world is no more same. Because of internet revolution, comma, rising consciousness of human rights, and there is a need that academic community give rethinking to these concepts. World is not as it used to be. कुछ तो रीथिंकिंग, कितना भी प्रोटेक्शनिज्म करोगे तो सिविल सोसाइटी ये सब तो है ही. तो ये सब मतलब कुछ थॉट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए. अब कौन बचा? फिफ्थ. मतलब अब तो ऐसे लाइन ऑफ थॉट दे रहे हैं, लिखने कुछ भी नहीं. अब फिर आ गया एक फेमिनिस्ट वाला बाद में करते हैं, बहुत बोर हो गया उससे. चलो फासिज्म वाला गुरु. Stripped to its essential, fascism is the total. अब ये क्वेश्चन कैसा लगा? सिंपल लगा? हाँ? You found this okay या problematic? Yeah. State is strong, but it is also not the Westphalian order altogether. The people have become conscious. These type of questions, like your ability to analyze and understand, they are trying to understand how you look at these things. So there is no one answer of these questions. But sometimes you should always remember these words: globalization giving rise to localization, transnationalism, contradictory trends, force us to rethink. We think करके कुछ questions बनते हैं. Academic community, they need to rethink, evolve the new concepts. But that answer will not fit, na? They are just asking you to rethink. They are not asking this question that how globalization has impacted the sovereignty. You are limiting the scope of the question. If you will just limit it, three perspective, state-centric and then globalization-centric, then you will limit the scope of the question. You should always think also in broad terms. Are they talking about the trends? So if you will write the question like this: Gilpin said this, David Hale said this, globalization has not impacted all states equally. Do you think that is fitting in the answer? नहीं होगा fit. One line, this is an open trend. How sometimes some question can be such which force you that some
conventional way of looking at the things needs to be changed. And why? Because new trends have emerged. So obviously, whenever any process happens, it never runs smoothly. If you'll say globalization will move smoothly, it will not happen. There will always be ups and downs. But obviously, the process has started and the world will never be same again. Because globalization has given rise to human rights consciousness, civil society, world has become more interconnected. This is like an essay type of an question. So always remember these type of words. Academic community needs to think. Where you cannot think, leave it on them. Okay. Bring them, let them think. We are the students. Okay. They need to rethink, they need to come up with the new concept. No need that you think all the time. Is that clear? तो academic community वाला word बहुत जगह use हो जाता है आंसर में. Now, sixth वाला. हाँ, एबेनस्टीन वाला जो क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई दिक्कत लगी थी? हाँ, मतलब मान लो ये एग्जाम में होता तो तुम लोग का क्या रिएक्शन होता इनिशियल? थिंकर का नाम नहीं तो उससे परेशान हो जाते हैं. अच्छा, और कोई क्या रिएक्शन होता एग्जाम में? फासिज्म लिख के आते. हाँ, तो फासिज्म ही लिखना था, ठीक है. मतलब कोई परेशान अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन जिससे लगे परेशान? नहीं. Okay. Now let us see. Stripped to its essential, fascism is the totalitarian organization of government and society by a single party dictatorship, intensely nationalist, racist, militarist, imperialist. Ebenstein. Examine the validity of the above statement. तो पहली बात तो Ebenstein is not important. Is that clear? Or examine the validity. So how will you start this question? Origin. What is fascism? ठीक है. तो what is fascism में I gave some idea, theoretical idea. Propaganda वो सब तो है, कुछ theoretical scholars भी तो थे. Revolt of masses या वो राइट कुछ था ना, रिएक्शन ऑफ द राइट. हाँ, सेंटर. हाँ, फासिज्म नहीं, नेशनलिज्म बोला था. रोजा लग्जमबर्ग नहीं. काउंटर रेवोल्यूशन. पहले ये सब चीजों से इंप्रेस करो, ठीक है. फासिज्म हैज बीन इंटरप्रेटेड आइदर एज अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, काउंटर रेवोल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ मासेस, और एक और था ऑफ राइट है, एक्सट्रीमिज्म ऑफ सेंटर, फियर ऑफ फ्रीडम. तो शुरू में यहाँ पे एक बॉक्स बना लो और वो नोट से लिख करके वो सारी चीज़ें एक साथ ही लिख दो, नोट से निकाल के. फासिज्म डिफाइंड एज रिवोल्ट ऑफ मासेस, हाँ जो भी है, रिवोल्ट ऑफ मासेस, काउंटर रेवोल्यूशन, और नाम लिखते जाना, जैसे रिवोल्ट ऑफ मासेस ओर्टेगा गैसेट, ओर्टेगा गैसेट. काउंटर रेवोल्यूशन आई थिंक लास्की. फिर रिवोल्ट ऑफ द सेंटर राइट, comma creative destruction or just a propaganda, totalitarianism. एक पेज छोड़ दो, लिस्ट लिखना, बस वही याद करना है, ठीक है. अब
stripped to its essentials fascism. तो fascism को क्या कह सकते हैं? अब fascism लिखना चालू करो कि fascism is considered as, या fascism is not recognized as a ideology. Rather a hodgepodge of ideas. They have manipulated the views of various scholars that you know. Machiavelli, Hobbes, Nietzsche, Bergson, वो सारा लिख देना. फिर some of the prominent features of fascist systems are first क्या है? Dictatorship of a single party. तो अब जब डिक्टेटरशिप है तो लिख सकते हो कि मुसोलिनी हेल्ड दैट डेमोक्रेसी इज अ लग्जरी ऑफ रिच एंड पार्लियामेंट इज टॉकिंग शॉप. तो दो दे केम टू पावर बाय डेमोक्रेटिक मीन्स, yet they established dictatorship of a single party. पार्टी दे दो, नाजी पार्टी, फिर वहाँ की फासिस्ट पार्टी, फिर द रूल ऑफ जुंटा और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो. नेक्स्ट इंटेंसली नेशनलिस्ट एक्सप्लेन कर दो. तो विच फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इट वाज? जिंगोइस्टिक. हाँ, अल्ट्रा नेशनलिज्म, जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म. फिर इसमें लिख सकते हो कि व्हाट इज अ हार्म इफ यू हैव जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म. तो दो नेशनलिज्म इज नॉट इनकॉम्पैटिबल विथ the word peace, but jingoistic nationalism is a biggest threat. Jingoistic nationalism is a biggest threat. Ultimately it led to Second World War. फिर रेसिज्म, तो रेसिज्म यू कैन एक्सप्लेन हिटलर, और यहाँ पे अब हाना एरेंट का चाहो तो एनालिसिस भी डाल सकते हो कि हाना एरेंट एक्सप्लेन्ड द कनेक्शन बिटवीन आइडियोलॉजी एंड टेरर. Hitler promoted racism या racial theory as a superhuman law to justify the execution of Jews and to show that and to inspire the Germans
that ultimately world will be under the control of Germany. जर्मनी का कंट्रोल हो सकता था वर्ल्ड पे, हो तो सकता था, नहीं हो सकता था है? नहीं, अगर इसने टू फ्रंट वॉर और नहीं की रहती तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही तो है, यूरेशिया ही तो वर्ल्ड है. जर्मनी हैड दैट कैपेसिटी आई थिंक टू एस्टैब्लिश. हाँ, वेस्टर्न यूरोप में तो बना ही सकते थे. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सब कुछ में तो जर्मनी ही मोस्ट एडवांस था, यूएस थोड़ी एडवांस था. रिसोर्सेस हार्ट मतलब जो था बन सकता था वैसे. चलो एनीवे, मिलिटरिस्ट, मिलिटरिस्ट कैसे एक्सप्लेन करोगे? मुसोलिनी का स्टेटमेंट वॉर इज टू विन, और इंपीरियलिस्ट लेबनसेरम हिटलर की जो पॉलिसी थी. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट एक्सप्लेन्स the features, the essential features of fascism. मतलब ये कौन से फीचर्स को, फासिज्म को, जो आउटवर्ड फीचर्स हैं. बट इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड मोर डीपर we can go for the study by Hannah Arendt. So they tell the structural features. Ebenstein's theory tells the structural features of fascism, and the more deeper understanding we can get from Hannah Arendt's The Origin of Totalitarianism. Now question number 6b. What is the relationship between democracy and liberty? Does democracy promote liberty? If yes, how? How democracy promote liberty? Liberals बोलते हैं. अच्छा, तो पहली बात तो पहला वाला सॉल्व करते हैं. What is the relationship between democracy and liberty? इसका स्टार्टिंग कैसे होगा? कैसे करोगे स्टार्टिंग? कोई एक अच्छा वर्ड नहीं बना सकते तुम लोग? कोर, सब एक ही कोर वैल्यूज पे ही आ रहे हैं, और कुछ? देन लिबर्टी, फिर हार्मनी कैसे रहेगी तुम्हारे आंसर में? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द आइडियाज भी तो होने चाहिए. रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी. What is foundation for? He is saying liberty is the foundation. You are saying democracy is the? और मान लो ये ऐसे होता तो तुम लोग क्या लिखते हैं? दूसरा, what is the relationship? No democracy, no liberty. What is the relation? कुछ डेमोक्रेसी पे कोई अच्छी लाइन, लिबर्टी पे कोई अच्छी लाइन? डेमोक्रेसी हैज अ इंट्रिंसिक वैल्यू. अब ये भी, हाँ, what is the relationship between democracy and creative freedom? Western nation या modern कर, not necessary. Western ही है वैसे तो.
पहले से ही कैसे डेमो को तो पूरा आंसर है अभी डस डेमो अरे एक जनरल इंट्रोडक्शन शुरू में तो जनरल दो ना फिर कोर वैल्यू 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 लिख के ही काम चले तो वही चलाओ डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी तो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ का नहीं लिख सकते द डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी are the two constituent elements of the modern way of life emerged in the West. क्योंकि हर जगह contested core great thinker फिर एग्जामिनर बोलेगा कि अलग वाले में अलग मतलब डिसाइड तो करो तो ऐसे लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी आर द कोर फीचर्स ऑफ the modern way of life, modern way of political life. They have become common sense. हाँ? They have become common sense. हाँ तो शुरू में थोड़ी थे तुम्हारे लिए तो इतना लाइट हो गया ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है इट इज सच अ लाइट क्वेश्चन है कॉमन सेंस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी तो यू कैन राइट दे आर द कोर फीचर्स ऑफ द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ स्पेशली इन द लिबरल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड उसके बाद क्या लिखोगे इन दोनों के आइडियाज में कहीं कुछ कॉमन चीज है अमर्त्य सेन क्या है अमर्त्य डेमोक्रेसी और लिबर्टी की अगर हम साथ साथ बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी के बेस में क्या है ह्यूमन डिग्निटी और डेमोक्रेसी के बेस में टॉलरेंस नहीं वही डिग्निटी ह्यूमन डिग्निटी ठीक है तो डेमोक्रेसी राइट क्या कर सकते हैं इन द बेस ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी लाइज द आइडिया ऑफ rationality of man and human dignity. अब लिबर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर दो लिबर्टी के बारे में पहले करा जाएगी डेमोक्रेसी लिबर्टी तो यू कैन राइट लिबर्टी emerged as a main concern in liberalism right the thoughts of scholars like John Locke Rousseau inspired American Revolution French Revolution comma established the notion of rights of man as sacrosanct over the divine rights of the king. अब नेक्स्ट लिखो once liberty is made a core value democracy as a form of government emerges as the natural choice. Right, as suggested by J.S. Mill, democracy is a form of government, is the only form of government which protects the liberty of man.
comma, the reason being the democracy is based on consent of the governed. फिर इसमें लिख दो जॉन लॉक, who gave the theory of natural rights of life, liberty and property. Gave the majoritarian model of democracy. Majoritarian model of democracy. Rousseau right gave consociational and participative democracy as the only solution for reconciliation between liberty and authority. Right, in contemporary times, scholars like John Rawls, Amartya Sen find intrinsic relationship between these concepts. Right, John Rawls, in John Rawls, comma, justice is the first virtue of the social system. Right, hence he organizes political system on a democratic lines to achieve the idea of justice as fairness. The idea of justice as fairness. Next, Amartya Sen defines development as freedom, comma, not only links democracy and liberty, but even democracy and development. Right, he talks about the intrinsic as well as the instrumental value of democracy. Public right, right, we can definitely say that democracy promotes liberty,
because it gives opportunity to the people to participate in the formulation of laws affecting them directly or indirectly. मतलब participation direct or indirect. Next, in democracies, people have freedom of speech and expression. Freedom of man. ठीक है, अम्बेडकर अम्बेडकर का नहीं आ पाएगा। हाँ, एक्चुअल वर्चुअल में कहाँ जाएंगे? हाँ, मेंशन तो किया तो है। इंडिया में डेमोक्रेसी लिबर्टी को कंपैटिबल लिबर्टी एम था, तो एम.एन. रॉय भी बात कर रहे हैं, गांधी भी बात कर रहे हैं। अम्बेडकर का नहीं आएगा, अम्बेडकर का आएगा इक्वालिटी, इक्वालिटी वाले में। अब ये कोई और ही करा दो तुम लोग। इसका आंसर तुम लोगों ने पोस्ट फेमिनिज्म में लिख दिया है ना, सारे schools of thought. There is a lot of disagreement among feminist theorists. What are the key areas of disagreements? In light of it, discuss the different schools of feminism. क्या क्या disagreement है among feminist theorists? स्टेट वाला नहीं, स्टेट में ऐसे स्पेसिफिक में नहीं आंसर बन पाएगा। मतलब कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, रेडिकल, लिबरल, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक रेडिकल वाले क्या हैं? रेडिकल वाले आर अगेंस्ट मेन। फर्स्ट वेव कॉम्पैटिबल है, फिर पोस्ट फेमिनिज्म है, फिर एसेंशियल फेमिनिज्म है, फिर कल्चरल फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म है, ब्लैक है, वाइट है, सब नहीं। जनरल नहीं नहीं, ऐसे स्पेसिफिक में जाओगे तो एक तो फंस जाओगे और बड़ा लंबा हो जाएगा और थकाऊ हो जाएगा आंसर। तुमको सिर्फ थीम पे लिखना चाहिए आंसर।
वो अगर कहीं भी गए ना कि डेमोक्रेसी पे देश से देश, लिबर्टी पे, तो वो ऐसे बहुत माइक्रो एनालिसिस विल नॉट बी इंटरेस्टिंग. तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग फेमिनिस्ट थियरिस्ट्स. इसका बताओ इंट्रोडक्शन. अम्ब्रेला आइडियोलॉजी से अच्छा वर्ड मेटा आइडियोलॉजी. तो पहला तो लिख दो, फेमिनिज्म हैज बिकम अ मेटा आइडियोलॉजी. with many schools of thought, या with many meta ideology, with many schools of feminism. Feminism started as a movement to give equality to the woman, comma, feminism evolved in the forms of waves अब इसमें देखो फर्स्ट वेव we can find two trends. Comma, the liberal and the socialist. ठीक है, तो liberals का लिख दो, right? Liberals believe that the situation of women can be improved by bringing the legal reforms, right? They demanded equal rights as enjoyed by men. Right, the prominent liberal feminists include Mary Wollstonecraft, comma, Emmeline Pankhurst, 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 Pankhurst. इवन जो जेएस मिल की वाइफ थी, हैरियट टेलर शायद नाम है, जेएस मिल्स वाइफ, देख लेना नाम इनका, एमिलीन पैंखर्स्ट, सिल्विया. ठीक है, नेक्स्ट, राइट, द socialist feminists inspired by angels believed that the subordinate status of women can end only with the destruction of capitalism. Right, their focus has been on analyzing the gendered
division of labor, comma, we can give the reference to the work of Sheila, row bottom, शीला रोबोथम. इवन आइरिस मेरियन यंग को भी सोशलिस्ट ही माना जाता है. आइरिस मेरियन यंग, शीला रोबोथम, आइरिस मेरियन यंग. Next, the second wave of feminism, represented by radical feminists like Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, Shule Smith Firestone, Suzanne Moeller Oken, right? They have emphasized on the need to end patriarchy and to recognize personal is political. ठीक है. Now write third wave. Right. In the third wave, feminism became quite ambiguous. Many contradictory trends emerged. Right. Some of the major developments in the third wave are first, postmodernists. कोई नाम बताया था, जूडिथ बटलर. Postmodernists, Judith Butler, right, who emphasize on understanding the way we talk about women, right. She says that gender is a performative word. Next, right, post-colonial feminism represented by कौन? सरोजनी साहू एंड चंद्रमोहंती तलपड़े. चंद्रमोहंती तलपड़े, right, who believe that the problems of women in the Western world
and the post-colonial world need to be understood differently. Next, black feminism. Right? Feminists like Bell Hooks, Angela Davis, held that the problems of black women differ from the white woman. Next, post-feminism. Next, look at post-feminism, right? Right? They started talking about the need for celebration of womanhood and domestication of men. वो कौन थी? सुजैन कोई थी? फालूदी, right? देखो, right? Suzanne Faludi in her book Backlash suggests that radical feminism is no more relevant in the Western world. Right? Some other concepts like new feminism, cultural feminism, ecofeminism, which either re-establish the essentialist approach rejected by radical feminists, or emphasize on the complementarity between men and women. Right? Thus, different trends describe the so-called intersectionality that has emerged in feminism, making it a meta-ideology क्वेश्चन ही भूल गए, क्या था क्वेश्चन? डिसएग्रीमेंट्स की एरियाज थे क्वेश्चन, ये लोग सही बोल रहे थे. व्हाट आर द की एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट? इससे पता चल रहा है, पता तो चल तो रहा है, पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लैक वुमेन डिफरेंट हैं, पोस्ट कॉलोनियल वुमेन डिफरेंट हैं, मेन एंड वुमेन, ऐसे सम अप कर देते हैं. ठीक है? So, right, on the basis of above debate, on the basis of above analysis, we can say that
The key areas of disagreement are first, the type of empowerment, needed for women, next, the relationship between men and women, next, right, the intersectionality versus homogeneity, matlab are all problems are same or there is a differences. Next, the role of state, नेक्स्ट और क्या है एसेंशियल, नेक्स्ट इसमें लिखो राइट है, हाँ, द इशू ऑफ पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, हाँ, एसेंशियलिस्ट वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिस्ट, एक साथ समअप कर देना तो ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट 10 फेमिनिज्म appears to be divided not only on epistemological grounds but also on ontological grounds. क्या चाहिए ये भी सब बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। ये भी वर्ड कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं समझ में आए, एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंड्स, ठीक। अब 5 वाला भी खत्म करो। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक क्या करना चाहते हो? या संडे तो कर ही रहे हैं, अब दूसरी चीज है, या तो प्रीवियस ईयर के थ्योरी का पूरा एक साथ ही खत्म कर दे क्वेश्चन, हाँ, एक बार राउंड अप करते हैं, हाँ? तो पूरा एक बार थ्योरी तुम लोग भी अपनी तरफ से पढ़ लो, तो अब आगे प्रीवियस ईयर का कर देंगे सारे जो भी लगते हैं, उसके बाद हाँ वो तो कर, मतलब फिर एक दूसरा पेपर उठा लेंगे, आईजीपी उठाना है उसके बाद, तो आईजीपी का पहले पेपर करेंगे फिर प्रीवियस ईयर के करेंगे। तो इसके बाद लास्ट क्या है, एक बार फिर से थियरी रिवाइज करो पूरा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक राउंड में पूरा ख़त्म करते हैं, जिससे थियरी फिर हमेशा के लिए ख़त्म। अब नेक्स्ट इसके बाद कुछ और मॉडल क्वेश्चंस जो पहले टेस्ट सीरीज सब में हुए वो डाल देंगे, उनको भी और उससे रिवाइज करते रहो। अभी तक तुम लोगों ने वो तो बनाया, समरी वमरी बना ली सब टॉपिक्स की, मतलब पेपर 1 की, ठीक है। उसके बाद वी विल टेक दैट इंडियन सेक्शन। संडे को रखो 2 बजे, 2 o'clock, फाइन। सैटरडे को बहुत लोगों को दिक्कत है, अभी तो तुम्हारा नहीं चालू हो रहा ना।